डिवोर्स को किस लेवल तक पुश करना चाहिए? Firstly, you should not be having that conversation. Wow, this is a divorce lawyer saying this. I am very pro marriage. Wow. शादी जरूर करिए. सबसे पहले तो you must talk about the role of the husband's mother and the wife's mother. It's okay for men to cheat. I'll be a Casanova. I'll be respected because of that. It's okay, she has to put up with it. No, dude, times have changed. Your marriage has failed. That does not mean you are a failure. I'm sorry, no one puts it out there. I want to put it out there. You need to be sexually compatible. There should be a basic knowledge of law. My wife is beating me. And I said, oh my God. Dowry statistics, the cases which are lodged, about 13,000 a year. Out of which 6,500 women commit suicide. Vandana ji, welcome to Unlock with Kunal Jai Singh. Thank you very much for having me here. Thank you for removing time, ma'am. Thank you very much. And thank you for the big smile. I'm so happy as a divorce lawyer, you're greeting me with such a smiling face. That's a change. The reason I'm greeting you with such a smiling face is क्योंकि आपके पास जितनी नॉलेज है लोग उसको एक्सप्लॉइट या टैप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि डिवोर्स लॉयर है तो डिवोर्स की बातें करेंगे, डिवोर्स के बारे में समझेंगे, डिवोर्स के बारे में सीखेंगे. वो तो है ही, बट ये नहीं समझते कि जितना नॉलेज एक डिवोर्स लॉयर के पास है कि शादी कैसे चलानी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. शादी कैसे चलानी चाहिए, क्या गलतियां कर रहे हैं लोग जिस वजह से वो कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, या इतने गंदे गंदे केसेस होते हैं, एलिमनी, ये वो इतना. करेक्ट. बट मैं ये सीखना चाहता हूं आपसे कि वो गलतियां क्या अवॉइड करनी चाहिए, और very on good. that direction I want to this thing. Very, So before very starting, good. thank Trust. you ma'am, thank you ma'am. Very So good. before starting this podcast, एक जेनरिक सवाल है. आज भी अगर देखें तो डिवोर्स रेट्स जहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट व्यक्ति ज्यादा हैं, मे बी मेन और वुमेन, करेक्ट, वहां पे डिवोर्स रेट्स ज्यादा है. और अभी मैं आज ही सुबह कुछ पढ़ रहा था, गूगल पे है तो आई कैन से इट. मैंने बोला इंडिया में सबसे ज्यादा डिवोर्सेस कहाँ हो रहे हैं? परसेंटेज वाइज महाराष्ट्र में हो रहे हैं, पर अगर स्टेट वाइज देखा जाए मिजोरम नंबर 1 है एंड बिहार लास्ट है. करेक्ट. Am I wrong? You are absolutely right. क्योंकि जब लोग डिवोर्स रेट के बारे में कुछ पढ़ने तो महाराष्ट्र आता है, बिकॉज डिवोर्स रेट्स 18% है महाराष्ट्र का. बट द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन साइज मैक्सिमम डिवोर्सेस मिजोरम में हो रहे हैं, और जहाँ पे मिजोरम में 100% लिटरेसी है. करेक्ट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज एक क्या है ना, एक इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी हो जाती है. आई एम यूजिंग द टर्म इंडिविजुअलिस्टिक, ऑल्दो इट्स नॉट प्रॉपर इंग्लिश, आई एम स्टिल यूजिंग इट टू एक्सप्लेन इट. जी. क्योंकि क्या हो जाता है, सडनली आप बोलते हो एक मेरा एक वजूद है लाइफ में, मेरा एक ईगो है, एक मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक मेरा सेल्फ एस्टीम है, एंड आई वॉन्ट मोर आउट ऑफ लाइफ. सो आई फील योर एजुकेशन इम्पैक्ट्स दैट. So wherever there is higher education, that's my thumb rule also. जी. तो आपकी एक tolerance level भी कम हो जाती है. जी. Because आपको you also have that feeling that why do I need to put up with this? I also know better. I can take care of myself. I can take care of myself, but I know better. एक क्या है ना, एक ignorance खत्म हो जाती है. And you say no, this is not right. I'm not going to let this happen. Sometimes it becomes over. Because your tolerance goes, you're not able to do like like marriage is like a jigsaw puzzle. जी. You have to constantly move the pieces जी. to get that jigsaw. And एक jigsaw puzzle में ना हमेशा एक वो blank वो होता है for you to move around. जी. I look at it as that is your space for adjustment, or that is your space for yourself and your own individuality. Like what you say, me time. जी. Or me, or me as an individual. बाकी तो you're moving around always in a marriage. Correct. तो एक आप जब educated हो जाते हैं तो you always want to also move around, and in some ways you want to remain static. जी. So जब ये clashes हो जाते हैं तो I feel आपके divorces की sort of rates बढ़ जाते हैं. Your tolerance reduces, and you're always looking also, I must say, for a BBD. What's a BBD? I'm gonna ask you, what is it? Bigger, better deal. Bigger, better deal. Hanji, BBD. That's an interesting term though. So I look at it like that. So that's why your divorce rates rise. That's why your tolerance levels also decrease. And like I said, you become more aware. But ma'am,
क्या होता है ना, जब फाइनेंशियली आप कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर जब आपका वजूद क्वेश्चन में आ जाता है, बिल्कुल। वो आपको टॉलरेट नहीं होता, एटलीस्ट इतना मैंने समझा है कि बिल्कुल वजूद जहां तक अगर आप रिस्पेक्ट दे सको ना, या हम्म। उस व्यक्ति को, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, आप अगर रिस्पेक्ट दे सको, आप उनको समझ सको, हम्म, तब जाके आप वजूद चैलेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि पैसे ऊपर नीचे ये होते रहेंगे, बिल्कुल कभी मर्द भी ज्यादा कमाएगा, कभी औरत भी ज्यादा कमाएगी, बिल्कुल। अगर वो ईगो हट जाए कि मैं मर्द, हम्म, मैं कैसे दब के रहूं, या एक औरत ये छोड़ दे कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जहां पे वजूद एक दूसरे का चैलेंज हो रहा है, वो सबसे ज्यादा है। Absolutely. एंड आई एम श्योर, ये मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि डिवोर्सेस ईगो, बिल्कुल ना, लोग सॉरी नहीं बोलते। एक ना, हम जब मैं काफी देखती हूँ हस्बैंड वाइफ में, बिकॉज आई ऑब्जर्व ऑल्सो कि आई जस्ट थिंक समटाइम्स यार सॉरी बोल ही दो। Okay, they say, oh, but I don't mean it and all that. अरे just say it यार, we say so many things in life. You know, एक आपका सॉरी बोलने से आपका 80% एंग्स्ट निकल जाता है। बोल दो सॉरी, इट्स नॉट सच अ बिग डील। ईगो सो एक वो जो ईगो पे आ जाता है ना, एंड आई फील अ लॉट ऑफ द फाइट्स इन कोर्ट आर ऑन ईगो। इफ आई वाज टू रिमूव द ईगो, देयर वुड बी नो फाइट्स। व्हाट आर यू फाइटिंग अबाउट? इट्स द ईगो. You know, it's the satisfaction of that ego. So if you just said sorry, and I think you should also learn to be a little polite in a marriage. You know, we are really polite to our friends. We are very polite to strangers. we're very understanding to them also. We are very understanding. But we are not so polite to our partners. I keep seeing that. You know, and I just wonder why we don't even express gratitude. We don't acknowledge. A lot of women, you know, when they come to me and they said, you know, ma'am, I did all of this. मैं सब कुछ टॉलरेट करने को तैयार हूँ, बट एक मुझे मेरे काम की acknowledgement और recognition नहीं मिली. You know, by recognition, I don't mean कि आप जाके award pin कर रहे हो on your wife. Correct. But just the acknowledgement that, you know, if she is a homemaker, you know, when your wife goes away for 10 days, then you realize how much work she does. I absolutely agree with you. आप एक कम्युनिकेशन नहीं करते. You never acknowledge. I feel even the wife should acknowledge and say, you know, thanks a lot. You've held on to a job. You're not just going to, like for your filming, it's hard work. Absolutely. You know, an office running, keeping a job, it's hard work. You know, so maybe even the wives also need to acknowledge. I had a very interesting case where the husband started off his life with about 28 years ago in Bombay city. He was just earning about 10 to 15,000 a month, and I know that क्योंकि मैं केस लड़ी हूँ. जी. And वहाँ से करते करते, because he was very astute minded in finances, पैसे बनाता गया, kept on doing a job, but he also started a mini hedge fund, you know, and वहाँ से आज उसकी net worth is between 300 to 500 crores in 25 years. Wow. And why he wanted to leave his wife, all throughout he kept on saying the same thing कि नहीं, वो ना मुझे acknowledge नहीं करती, उसको जितना भी दे दूं ना मैं, वो कभी खुश नहीं होएगी. उसने मुझे आज तक acknowledge ही नहीं किया कि बेब्स, हम लोग 10,000 रुपए कमाते थे और आज तो 300 और 500 करोड़ की तेरी वैल्यूएशन हो गई. It is I'm not only on the money. It is a big acknowledgement of where you've reached. जी. You know, so that is one part. But the wife also felt unacknowledged. She said, you know, I keep a great house. I brought up the children so well. One of the children graduated from Harvard. You know, the other one is still studying in Yale. So she said, you know, he never acknowledged that. That if I hadn't sat at home and been with the children so that he could focus completely on his work. And I just think in my mind, my God, all they had to do was go to a marriage counselor and acknowledge each other if they couldn't communicate with each other. This was my next question to you. Counseling का कितना बड़ा रोल है? Because बहुत लोग स्टिग्मा समझते हैं कि मैं काउंसलिंग क्यों जाऊं, मैं तो ठीक हूँ. है, क्योंकि मैं सुनता हूँ कि हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, बट मेरे को लगता है काउंसलिंग हर इंसान को करना चाहिए कहीं ना कहीं अपने चीजों के लिए, और मैरिज में स्पेशली काउंसलिंग का कितना बड़ा रोल होता है. एंड यू नो, यू शुड गो टू, फर्स्टली तो काउंसलिंग में कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए. ओके, ये जो इंडिया में बोलते हैं ना, आप काउंसलर के पास चले गए, अरे तू पागल हो गई है क्या,
You That know, is the- that is not correct. And I feel that, you know, when you go to a counselor, don't go to a counselor who is a friend or a relative, because they are already viewing you From a through lens. their own lens, Right. you know, and from their own lens, of how they view you also. You know, you don't know, you're talking to a friend who's going through a bad marriage. Like, I Hmm. have a case like that, Hmm. where that lady's marriage not bad. Okay. And she actually used to act in TV. And she used to keep on, you know, her friend used to keep telling her, but your husband doesn't give this. But actually, your husband should be doing that. Hmm. So she started viewing her husband through her friend's lens. And the friend herself was going through a really bad marriage. Hmm. So Hmm. don't talk to friends or family. Go to an independent counselor. I feel that is the way forward. Hmm. They're trained, you know, and you must be very upfront with the counselor and say, look, we want to save our marriage. Hmm. Okay. And the counselor can tell you if there are any real issues. Hmm. You know, real issues, even the Supreme Court talks about it and they say that ये जो आपकी रोज की ये नोक-झोंक हो गई, ये real issues नहीं है, तो normal wear and tear of marriage है. Hmm. इसके लिए आप प्लीज कोर्ट नहीं आइए. This you can sort out on your own self. काउंसलर के पास जाइए. या अपने आप भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, थोड़े बहुत तो घर पे भी सॉर्ट आउट कर सकते हो. करेक्ट. नहीं आपसे अगर नहीं हो रहा और अगर नहीं डिवोर्स हो- तक पहुंच रहे हो, उससे पहले काउंसलर के पास जाओ. बिल्कुल. पहले काउंसलर के पास पहले जाओ. काउंसलर के पास जाइए. इनफैक्ट व्हेन अ लॉट ऑफ कपल्स कम टू मी, हाँ. I always say, are you sure? You know, so that is another thing that I'm doing differently. हाँ. I don't think, अच्छा चलो great case आ गया, चलो. You know, I always ask them, are you sure there's no going back? You know, have you explored all options? Are you looking at a reconciliation? Try तो करो. Hmm. You know, they don't no send a legal notice. ऐसे मैं पीछे से गाइड करती हूँ. आप पहले ट्राई करो अपनी तरफ से. Hmm. Because sometimes you never know, it might just be a sorry, Hmm. which can change things, or just a simple communication. Hmm. You know, and of course, counselors are always there. Hmm. You must go to marriage counselors because these are not a Western concept. जी. You know, in India, we always say it's a Western concept. हमारे तो इतने लोग इतने, हम उनसे सलाह ले सकते हैं. Salah is different. But counseling is very different. It's a very professional experience. Hmm. You know, go to a Hmm. counselor, Hmm. try and sort out your marriage. Divorce should be your last option. कि वो भी अगर काम नहीं कर रहा है तब जाके तब जाके. अब समझ में आएगा कि दोनों की खुशी इसमें. बिल्कुल. If I'm wrong कि कई बार लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा को नहीं एक्नॉलेज करते हैं और लगता है कि ये हमें Absolutely. अभी अटैक कर रहे हैं, पर वो अटैक शायद नहीं कर रहे हैं, वो एक चीज कर रहे हैं या एक चीज बोल रहे हैं जो मेरे चाइल्डहुड में मेरे जो ट्रॉमास हैं Correct. वो उभर के आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो फीलिंग जो था वो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग था मेरे अंदर Correct. कि ये अगर बोल रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर समवेयर इन्वोकिंग दैट फीलिंग ऑफ यू आर नॉट गुड इनफ. Yeah. Like, एज अ हस्बैंड यू आर नॉट गुड इनफ, एज अ वाइफ यू आर नॉट गुड इनफ. बट कहीं ना कहीं शायद चाइल्डहुड में स्कूल में टीचर ने आपको बहुत ही लंबे समय तक फील कराया अच्छे नहीं हो, या माँ बाप ने फील कराया, दोस्तों ने फील कराया, वो चीज आके आपके स्पाउस आपको लगता है कि यार ये इतना मुझे फील करा रही है. बट addressing childhood trauma is also very important, I feel. absolutely. Absolutely. And you know, because why? Because at the end of the day, today, the pressure is on making the marriage a success. Hmm. But I tried to separate the two and say, your marriage has failed. That does not mean you are a failure. Hmm. Hmm. You may be successful in 9 out of 10 ventures in your life. You know, if we look at life as one big venture and adventure. जी. And just because your marriage has failed doesn't mean you are a failure. Hmm. So this separation is also very important. आप childhood trauma की बात कर रहे हैं, you know, तो एक तो childhood trauma भी हो गया. ये भी what you say, your verbiage Hmm. also is very important. Hmm. You know, in a marriage, especially, like you said, you can rub each other the wrong way like nothing else. Absolutely. You know, it's like a glass, you know, which is constantly being molded, and everything is see-through, Hmm. and that's your marriage Hmm. for each other, for the spouses. जी. And unless and until you mold each other, and then if the cracks start coming and it breaks, you join it, still the crack is visible. So you have to be very careful Mhm. also in a marriage. Mhm. And actually, that is one of the most precious relationships. And we treat it with so much of callousness. And I just find that heartbreaking.
Because I just sometimes feel that why are we talking about marriage so lightly? Why haven't we made an effort to, sort of made an effort to sort of maybe align to that person's taste? I'm not saying adjust and compromise. Align. Like I'll give you an example. When I got married, and in the house there's no non-veg allowed. जी. Okay, so I said ठीक है, no problem. बाहर से खा लेंगे. ये इतने hotels हैं, सब मेरे लिए ही चल रहे हैं. जी. You know what I'm saying? Yeah. Is it that big an adjustment? Which people come to me and they say, they told me you cannot wear a dress at home. ठीक है यार, pants पहनी. Or if your wife says the same, that listen, if you're late, just call me. Is it such a big adjustment? No. I look at it as she cares. She cares. I look at it like that. Yeah, so, but people just don't want to make that basic effort. So if you don't make a basic effort for one of the most precious relationships of your life. Most intimate relation of your life. Yeah. It is because they know you inside out, literally. Absolutely. So why aren't you making that effort? And why is everything, like I say, you asked me, आपने शुरू में पूछा था कि marriages कैसे चल सकती हैं? मेरा वही सवाल होने वाला था कि मैम लोग आपसे डिवोर्स के बारे में तो बहुत बात कर लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं, बट ये नहीं समझते हैं कि एज अ डिवोर्स लॉयर आपके पास इतने केसेस हैं जो आप हैंडल कर चुकी हैं, जहाँ पे आपके पास ये नॉलेज है कि शादियां चलानी कैसे चाहिए. बिल्कुल. तो ये जो एंगल है आई थिंक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जो आप गलतियां देख रहे हैं, जिस वजह से आप कोर्ट तक पहुंच रहे हो और डिवोर्स तक पहुंच रहे हो, वो क्या है, कैसे चला सकते हैं? So, very good question. Thank you. Really, really good question. Okay. I feel कि मैंने इतने केसेस अब हैंडल कर लिए, प्लस काउंसलिंग जो मैं करती थी. So I think the first thing is communication. Let there be better communication. Let there be direct communication. Okay, that is number one. Okay, number two, acknowledgement. कि आप, what do you both mean to each other? What do you both get into each other's life? Okay. Thirdly, your marriage partner is not your twin. Okay. So if you like Marvel movies, it doesn't mean your partner has to love Marvel movies. She can probably like a romantic movie, or it can be vice versa. जी. Okay. So please don't expect that you have to have the same taste and not your twins. Okay. Number 4, which people don't speak about enough. You have not come into the marriage as a teacher or a principal. You have not come to teach your partner. कि जब मैं इसको सिखाती हूँ या मैं इसको सिखाता हूँ, तू अपने घर से कुछ नहीं सीख के आई. I hear this all the time. मैं क्यों सीख के आऊँ घर से अपने? मैंने सीखा, मैंने सीख. You know what I'm saying? What kind of a statement is this? That means somewhere in your mind it's there that, I have to teach this person. Why should you teach a person? Let the person be. What is so great in trying to teach that person to mold them according to what? Why can't you be two somewhat different individuals and make a composite whole? Why can't you be that yin and yang? I don't like this, and I find a lot of marriages break because of that. Ma'am, I tried to tell him that this is what he needs to do. Why should you tell him? You can recommend, you can suggest, and if it doesn't happen, well, then you got to say, it's never going to happen. And then you have to realign your thought process that I'm okay with that. But this thing that I'm going to make this person as per my clay model, that shouldn't be your aim in a marriage. And I think a lot of times you must spend time with each other. We always hear in India कि जी marriages में इतने लोग घुसे हुए हैं. इतने लोग घुसे हुए हैं. I just tell them कि यार, that band बाजा बारात ना वो wedding के time था. अब आप marriage में आ गए हो. Marriage is very different from a wedding. Wedding, yeah. So be in the marriage and spend time with each other, get to know each other, and get to acknowledge and sort of be easy with each other.
and appreciate the differences. Hmm. Once you start doing that, you know, you're on a good path. हम जब दोस्ती करते हैं, we don't expect our friends to be our exact carbon copy. We don't. Absolutely. You know, so why do we expect our partner to be? And have a higher tolerance level. It's okay, यार, छोड़ दो. Impatience बहुत बड़ा फैक्टर है अभी आज के टाइम बहुत ज़्यादा. So I said, no, tolerance level. Hmm. Learn to be patient. में. You know, a few of these are these. And of course, I'm sorry, no one puts it out there. I want to put it out there. You need to be sexually compatible. It is a very big part of marriage. In fact, even the court of law, if you're not sexually active with each other, it can be one of the grounds for divorce. So, you know, learn that aspect also. Spend time exploring each other. Likes, dislikes, you know, what are your preferences? I mean, in general also. जी. You know, you can look at all these factors. And please, although you both are individuals, but you both are a couple also. You know, so keep your individuality also, but be together as a couple also. You're a team now. You know, लोग कहते हैं कि आफ्टर कुछ साल शादी के बाद सेक्स ड्राइव कम हो जाता है. 7 year itch. 7 year itch. आजकल तो वो भी नहीं रहा क्योंकि आजकल तो 7 month itch हो गया और जो डेट कर रहे हो तो पहले के जमाने की तरह नहीं है कि शादी के बाद ही हम इंटीमेट होंगे. Correct. आप एक दूसरे को बहुत एक्सप्लोर कर चुके हो. Correct. तो वो 7 year itch बहुत जल्दी आ जाता है. 7 months. 7 month itch हो गया. बट ये सच में ये फैक्टर हो सकता है या ये होता है? होता है. In fact, one case came to me just quite recently where the wife said the husband doesn't want to perform. He says, once a month we'll do it. I said, my God, yaar, what is this? What is this? GST थोड़ी भर रहे हो? So, you know what I'm saying? कि month on month ऐसा ये मैं date एक fix कर दूंगा. You know, so she said, I just don't feel like doing it with him. And she says, and we have never seen each other. I said, how long have you been married? She said, ma'am, 15 years. She said, we've never seen each other without clothes, with the lights switched on. In 15 years? In 15 years. So, all this is also happening. Sexual compatibility is a big factor. It's a big factor. Boredom? Boredom, of course. Bore हो गए. So then don't spend that much time also with each other. So you spend that much time. Okay. Just look at it as a jigsaw puzzle. जी. ये जो एक है portion, ये थोड़ा अलग होना ही चाहिए. That empty portion, so that you can move around. Don't spend that much time also. You may remember जब joint families होती थी. You know, you were with everybody. So you were not 24 hours into each other and you know, I feel that थोड़ा सा take that also into consideration. That don't be with each other. And your husband doesn't need to inform you 24/7 where he is. Neither does the wife. Absolutely. You know, so don't go on that key that I should know your every movement. नहीं. Because then you're bound to get bored. You know, it's like a song playing on loop. तो शाम को आके क्या बात करोगे? कैसा था तुम्हारा दिन? वो सब तो पता है. Yeah, exactly. And it's a song on loop. You know, जो number one song होता है, we keep on listening. You know, 1-2 महीने सुना, उसके बाद you're like, oh, अब नहीं सुनना मुझे. You know, at all. So it's like that. Give each other adequate space. And also when I spoke about individual interests, you both must have a life away from each other. Very important. I agree. You must have different, I won't call them hobbies, but different activities that you can do. Like I like playing tennis. I love tennis. I'm a big fan. Oh, lovely. A book I've dedicated to Rafael Nadal. According to me, he's the perfect man. Okay. Yeah. So I've this thing. I love tennis. जी. You know, not necessarily that my partner should love tennis. You know, so these sort of things. Like I love reading. You know, and I read everything. So not necessarily my partner should love reading. Correct. So spend that time also away from each other. से मैंने कहा कि शादी इमोशनल डिसीजन होती है. आप अग्री करती हैं? बिल्कुल. पर उसमें भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए मेरे हिसाब से. कुछ कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो शादी से पहले अगर अनकंफर्टेबल है, आप सोचते हो कि कैसे पूछूं, बट नहीं, कर लो वो कॉन्वर्सेशंस. बिल्कुल. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका ग्राउंड वर्क क्लियर है कि ये सारी बातें हो चुकी हैं. बिल्कुल. ये ऐसे क्या सवाल जवाब एक कपल को करना चाहिए एक दूसरे के साथ, वेदर इट बी अरेंज मैरिज और वेदर इट बी लव मैरिज, ये चीजें पहले थ्रैश आउट कर लो.
ओके, फर्स्टली तो मैं कहूंगी आई एम वेरी प्रो मैरिज। Wow. शादी जरूर करिए, एक दफा तो लाइफ में जरूर करिए शादी, यू नो, हाँ. सो यू मस्ट गेट मैरिड, ओके। एंड आजकल ना, व्हाई वी नीड टू हैव कॉन्वर्सेशंस, क्यों जमाने बदल गए, बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है। Hmm. तो एक दफा अवेयरनेस आ जाए, यू शुड नॉट शाई फ्रॉम हैविंग द कॉन्वर्सेशन। 8-10 चीजें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो यू मस्ट टॉक अबाउट द रोल ऑफ द हस्बैंड्स मदर एंड द वाइफ्स मदर। हस्बैंड्स मदर की थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है अगर वाइफ इज गोइंग टू बी स्टेइंग देयर, ओके। तो ऐसे हस्बैंड्स मदर मैं सब जगह बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, हस्बैंड्स मदर इज मदर इंडिया। प्लीज डू नॉट फॉरगेट, Yes. okay, because you have to make that relationship work. Hmm. So don't go कि एकदम ही ना कि मैं भिड़ने ही जा रही हूँ वहां पे, Hmm. वो आप छोड़ दो। Hmm. वो कॉन्वर्सेशन आपको जरूर करनी चाहिए कि ओके, हाउ कैन वी मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, यू नो, बिकॉज आई वांट टू रिमेन मैरिड टू यू। लेट्स से मैं वाइफ की तरफ से बात कर रही हूँ, जी. ओके। लेट्स कॉल द वाइफ रेनू। Renu. Lovely. सो रेनू बातचीत कर रही है और बोल रही है कि नहीं, मेरे को ना इससे करनी है, रेनू एंड रोहित, Renu and Rohit. Done. रेनू एंड रोहित। Done. सो रोहित से शादी करनी है। रोहित बताता है कि नहीं नहीं ठीक है मम्मी, ठीक है एंड ऑल दैट। Hmm. नहीं रोहित, मुझे जरूर बता कि अगर उनकी कोई खास प्रेफरेंसेस हैं Hmm. और क्या चीजें हैं जो मैं नहीं करूं जिससे वो अपसेट होंगी। Hmm. एक ये बातचीत करने से आप छोटे नहीं हो जाते। Hmm. सो हैव दैट कॉन्वर्सेशन। About the mother-in-law. मदर इंडिया, Mother India. ओके, जी. वो जरूर कॉन्वर्सेशन हो रही है। लाइकवाइज रोहित भी पूछ सकता है रेनू से, कि आपके परिवार के कितने इन्वॉल्व आपके, हाँ बिल्कुल, यू नो, और क्या क्या मम्मी जानना चाहती हैं कि यार कुछ बातें अब हम वी आर अ मैरिड कपल, अब वो मम्मी को मत बताना, यू नो। एक ये भी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जरूर, ओके। थर्डली आपके फाइनेंसेस के बारे में होनी चाहिए, ओके। लेट्स से दिलजीत द गाय is getting married to Sukanya the girl. Okay. Sukanya is from a community which doesn't spend too much money. Okay. Diljit, to with a name like Diljit, you can't be anything but a Sardar. Okay. So if you are from different communities or you've been brought up differently, आप conversation जरूर करिए पैसे के बारे में कि यार हमारे घर में ना ऐसा ऐसा चलता है, तो आप भी वैसे ही हो जाइए, आपके लिए इजी हो जाएगा। कि अभी मेरे घर में आके, लाइक आई हैव अ फ्रेंड मैरिड टू सरदार, उनके घर में रोज का 17 लीटर मिल्क लगता है, ओके, विच इज एग्जैक्टली, एंड देयर सिर्फ 4 लोग हैं घर में। सो आई टोल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज नॉट अ सरदार, क्या करते हैं उसका, पीते, यू नो, सो दैट्स इट। सो हैव दीज कॉन्वर्सेशंस। कैसे टैकल इम्पोर्टेंट, ये फाइनेंसेस कैसे टैकल होंगे कि हमारे घर में ऐसा है, यू नो, कईयों के घर में कंजर्वेटिव स्पेंडिंग है। हैव दैट कॉन्वर्सेशन कि वहीं पे जाके नहीं एलवी का बैग पहले दिन ही खरीद लेना, यू नो, डोंट डू दैट, बिकॉज ना ये सब चीजें ना दिमाग में रह जाती है, ओके, यू नो। एंड आई ऑल्सो सेड, आई सेड ये जरूरी नहीं है कि मुझे एक ब्रांडेड ही कॉफी पीनी है, नाम नहीं लूंगी, बट समझो 1000 रुपए की मुझे वही कॉफी पीनी है। सोचो तो सही घर में क्या चल रहा है। डोंट से कि आई एम लाइक दिस ओनली, नो, बट यू आर नाउ पार्ट ऑफ अ फैमिली, सो गेटिंग इनटू द फैमिली, बी लाइक शुगर, घुल जाते हो, घुल जाओ, शुगर का वजूद नहीं कम हो रहा, वो सब कुछ मीठा कर रहा है, बिल्कुल, you know, and be happy yourself also. I'm not saying कि आप अपनी नीड्स मार लो, एक अलग तरीके से कर लो। मैं ये भी नहीं कह रही कि छुप के कर लो, आप बाहर तो जाने ही वाले हो, तब पी लो, करेक्ट। मदर इंडिया, फाइनेंसेस, हैव द कॉन्वर्सेशन अबाउट रिलीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव द कॉन्वर्सेशन अबाउट फेस्टिवल्स, कि कैसे फेस्टिवल्स बनाने वाले हैं, कैसे होती हैं फेस्टिवल्स, लाइक दिवाली इज अ बिग फेस्टिवल, कैसे मनाते हैं, यू नो। जैसे गुजराती फैमिलीज में चौपड़ा पूजन होता है, पंजाबी फैमिलीज में चौपड़ा पूजन नहीं होता, यू नो। तो पंजाबीज का कि बस दिवाली आ गई
you know, it's a different kind of celebration. करेक्ट, Gujaratis में थोड़ा अलग होता है. अलग होता है. तो have that conversation because ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, but these are an integral part of your life. Got it. Have the sexual compatibility conversation. Try नहीं करना शादी से पहले अगर नहीं कर रहे. वो नहीं मैं बोल रही. वो नहीं मैं बोल रही. Okay? Have that conversation. And have a conversation about your children because काफी मेरे पास केसेस आते हैं in which they say हमने शुरू में डिसाइड किया था won't have children. Now 5 साल शादी के बाद she's saying कि मेरे को child चाहिए. I want to have a child. तो I don't want to stay with her because मैं तो शुरू से ही clear था. I don't want to have children. So have that conversation. That's a very important conversation. Very important. I agree with you. Have a conversation where you're going to stay. Are you going to stay with your in-laws? Are you going to take up a separate place? Are you buying a new house? And if you're going to stay with the in-laws, what are the general house rules? You know, general house rules सबके कुछ ना कुछ होते ही हैं. You know, like one of my relatives, extremely wealthy, but एक उनका house rule है, रूम से बाहर निकले लाइट ऑफ कर देना. Oh my God, that daughter-in-law became so परेशान in the beginning. She said, मैं अभी निकली हूँ, I just got to take पानी, वापस आई हूँ, lights on. It became a ticking point for her. And it's such a small thing. You know, so have this general rules conversation. And आप कहाँ पे रहने वाले हो? अगर if you're staying with your in-laws, general rules, you can have the conversation कि नहीं, we are thinking कि थोड़ा सा marriage को हम boost अपना कर सकते हैं. We can take the house next door. We can take it on rent. So we are next to you also. And we got our own space. We got our own space. How important is that? I think very important. But आप बोलोगे कि लोगों को इसको इमोशनली नहीं देखना चाहिए. No. Because ये बहुत इमोशनल हो जाता है कि look at it. घर तोड़ दिया लड़की ने आके. नहीं. ये हो गया, वो हो गया. बोलते हैं. No. बोलते हैं. I mean, 4-5 years later, you all are still together, happily married. So I think वो parents must be ज़्यादा happier rather than this. You know, so take space. You'll also come to know how compatible you all are. Then there is no extraneous factor जिसको आप blame कर सकते हो कि नहीं शादी नहीं चली because सास ने ये बोल दिया, ससुर ने ये बोल दिया, you know, मासी जी ने ये बोल दिया, you know, बुआ जी has said this. And you establish your own identities also. So staying the conversation important. Very, very important. And I also feel, have a conversation. I feel a lot of social occasions. Okay, introvert, extrovert gets married. Introvert का क्या नाम दे? लड़के को बनाते हैं इंट्रो, उसका नाम रखते हैं समीर. और इसका लड़की का वंशिका. Oh my Okay. God. I love it. So Vanshika has got a huge family. Okay, and she wants that Sameer should come for every function. Because हमारी family में ऐसे ही होता है. So you know, you must make that clear because Sameer might say कि नहीं, I don't want to come for every function because मेरा तो काफी भारी काम भी है and I am not that person. So हमेशा ही मैं नहीं आ सकता. तुम्हारे तो हफ्ते में 2 दफा and it's happened with my cousin. जी. You know, तुम्हारे हफ्ते में तो 2 दफा फंक्शन. हमारे फंक्शन ही फंक्शन है 3-3 4-4 बजे चल रहे. Plus I have to get to work the next day. You are not working as of now. So how does that work? Correct. Have that conversation. You know, so you've covered everything then. You've got finances, you've got sexual compatibility, you've got, you know, where you're going to stay, you've got Mother India, of course, you know, and you've got your relatives, you've got your outings, you've got children. So I think, you know, these by and large checkbox a lot of things. I've made a note of all of this. Okay. So now in all of this, mother-in-law, Mother India, finance, religion, festivals, sexual intimacy, children, कि children चाहिए नहीं चाहिए, where you're going to stay और house rules क्या होंगे. Correct. Introvert and extrovert को कैसे एक दूसरे से डील करना चाहिए. इन सब में से नंबर 1 चीज क्या है जो मतलब अगर 10 केस आ रहे हैं मैक्सिमम केसेस ये एक फैक्टर है जो ब्रेकिंग फैक्टर था. बाकी सब हम कर लेते पर ये अगर 2 फैक्टर चलिए 2 फैक्टर्स टाई हो गया वो जी. फोटो फिनिश जी. मदर इन लॉ पैसा
और मदर इन लॉ फॉर द वुमन और फॉर द मैन ऑल्सो, बिकॉज Or for the woman. बिकॉज मैंने देखा है कि कभी कभी जो जब वहाँ पे इन लॉज बहुत इंटरफियरिंग हो जाते हैं घर में, या बहुत ही ज्यादा फ्री हो जाते हैं, let me put it for lack of better words, और बैक सीट ड्राइविंग backseat driving. नहीं, more for the daughter, For the- because the husband may not fight that much with the wife's mother, But हाँ, yeah, and finances. तो ये दो तो पक्का ही कॉन्वर्जेशन कर लो, अगर आप लोग शर्मा भी रहे हो शादी से पहले, ये कर लो. और डिवोर्स को किस लेवल तक पुश करना चाहिए कि यार ये रीजंस नहीं है डिवोर्स के, हम बस अभी हर्ट फील कर रहे हैं तो हम बात बात पे डिवोर्स का शब्द निकाल रहे हैं. Divorce, though, firstly you should not be having that conversation. Wow, this is a divorce lawyer saying this. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Because I said I'm pro marriage. Absolutely, ma'am. You know, so don't just in every this thing कि अच्छा हाँ चलो ठीक है, divorce. What is this? वो टॉप रीजंस बताइए कि अगर ये आपके साथ हो रहा है, फॉर फीमेल्स एंड फॉर मेल्स, दो नाम वापस देंगे, कि ये Choose करना. हाँ, क्योंकि अभी मैं एक्चुअली डिवोर्स के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे कि ये चीजें आपको टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, आप जिस भी स्थिति में हो. आपके पास कहीं नहीं है जाने को, फिर भी ये चीज मत टॉलरेट करो, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो न्याय दिलाने के लिए हैं. बिल्कुल. वो सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा लिस्ट बताएंगे तो पीपल शुड नो कि दिस इज नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल. For a woman, woman का क्या नाम दूंगी मैं? स्तुति. If you are in an abusive marriage, please do not tolerate it. Okay? Abusive marriage. Abusive marriage. And abuse can be physical, emotional, mental, and financial. Okay? More I am on the physical. Because आपका ना एक your self-esteem completely dies. And it is a psychologically proven fact. You get in an abusive cycle. You know, you start identifying with your abuser. Because people say कि उसको मार पिट रही है, क्यों वापस बार जाती जा रही है. But you know, in a way, she's become a victim. And she cannot break out of that chain. तो वो comfort zone हो जाता है उनका. वो comfort zone. She feels कि this is my normal. This is my normal, and what will I do without this person? You know, I mean, of course, there are a lot of psychologists and psychiatrists who have spoken about it. You know, so you cannot get out of it that easily. This is a big no-no. Big no-no. I just say, if it is happening all the time, no, but actually he didn't mean it. What do you mean? You got a gash on your head. What do you mean? He didn't mean it. He 100% meant it. You know? And even verbal abuses. Verbal abuse is also beyond a point. You know, you can't just be calling your wife the B word and the W word and Yeah. you know, you can't do that. No. It's unacceptable. Even in fun, it is unacceptable. Yeah. Certain things फन में तो बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि फन के पीछे तो आपका मतलब होता है, और ये बात आप भी जानते हो कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ, पर वो मजाक नहीं है. वो मजाक नहीं है. मजाक में मैं तुम्हें अच्छी चीज तो कभी मजाक में नहीं बोलता हूँ. करेक्ट. बुरी चीज क्यों मजाक में बोलता हूँ. करेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. या वेरी वेरी करेक्ट. अच्छी चीज नहीं बोलता, तू तो बहुत अच्छी है यार, वो तो नहीं बोल रहा मजाक में. तो ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप बोलना चाहते हो. ये बस आप एक कवर लगा रहे हो. सो डोंट do that. Abusive marriages. दूसरा क्या? And I'll come to the man also. जी. So Ramesh का अगर एक मेरे पास एक किस्सा है, where one Ramesh was asking for an appointment and he said कि you know, I want an appointment. मैम को प्लीज बोलिए. ठीक है. तो I said नहीं, मैं very busy. He said नहीं, मैं कितने भी बजे आ जाऊंगा. So I said नहीं यार, not today. So eventually my office, he said आप सिर्फ मैम को बोल दो, my wife is beating me. And I said, oh my God. Wife is beating me. Actually होता है, लोग बोलते नहीं. Oh my God. I'm getting goosebumps as I say that. And he came. I said ठीक है यार, जितने भी बजे आना आ जाओ. And he was such a broken man. Because एक तो आपको मार पिट रही है, आपका वैसे ही सेल्फ एस्टीम जा रहा है. Plus, socially also, you know, people don't accept that men get abused. But होता है. And I want to put it out there. Please. You know, कि men do get abused and they must talk about it and they must seek help. Don't come in this society's thing
that नहीं, you know, big boys don't cry and men never cry and you know क्या हो गया तू एकदम ही वो. It is true. And I asked him, he has 2 children, and I asked him, I said कि क्या हो गया? नहीं ma'am, 7 years, 8 years हो गए. I'm just going through this. I said, why did you put up with it? I said, you're doing so well professionally. नहीं ma'am, एक दफा शुरू हुआ, फिर I thought she'll improve. I said, what does your sister have to say about it? He said, ma'am, I've not told anybody. And his children knew about it. Because they're saying, I said, how does she eat you? He says, picks up pots and pans. And he showed me a few gashes. And I said, my God, this is unacceptable. You know, and he was providing for everything. Wife was not working, he was providing for everything for her and the children. And he was just like, I could see him like, you know, just shrinking in front of me. You know how you have a visual? And I just felt terrible. You know, and then eventually we filed for divorce and, you know, so on and so forth. But, and then I saw him blossoming. You know, I mean, I gave him a few tips and you know how he kept on blossoming. You know, and then he was chatting with a few people, you know, and they kept on saying good things. Ki nahi yaar, you're doing good, you're doing great. So, you know, your self-esteem, because as a man to get beaten, in that sense, it's like a double beating. But do you think laws are more leaning towards women now with the new laws that have come in? Or I just think it is because this Bangalore case has just happened. It's just happened. I didn't want to bring it up, but अभी आप जब बोल रहे हो, क्योंकि मेरे को ये था कि यार देखो, just because बात नहीं होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि मर्दों के साथ भी गलत नहीं हो रहा है. खाली वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ मैन और इस सब की वजह से बोलते नहीं है कि भाई मैं पिट रहा हूँ या मेरे साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है घर पे, या कुछ ऐसे रीजंस है जैसे you see, it is a, like I say, that you have to go into the genesis of the law. कि लॉ ये बना क्यों था और अब क्या हो रहा है. You know, so I will still say women suffer more. Okay. There is your dowry statistics, you know, the cases which are lodged by and large is about 13,000 a year. Out of which 6,500 women commit suicide. So, you know, in dowry cases, either commit suicide or are burned to death. So dowry still exists. The cruelty against women still exists. I'm not sort of trying to diminish what that poor boy went through. Yeah. You know, but I'm just saying that the magnitude, you know, perhaps that is something that we as a society, 1,000 to 1. Yeah. We need to put a spotlight on that. मेरा जो सवाल मैम है कि not because कि जो हो रहा है, I'm talking because is the legal system, because या एक जजमेंट आ जाए, ये है सेटलमेंट, नहीं, काफी जजमेंट्स हैं, ये खत्म करो. अभी जो चीजें मेरे को खटकी वो था कि एक तो उसको वहां से वहां बुलवाया जा रहा है. उसका यू नो एक सोल्यूशन था एक्चुअली, वो पावर ऑफ अटर्नी दे सकता था. ओके. तो क्यों गया वो इतनी टाइम में. आई वाज डिस्कसिंग विद माय जूनियर्स एक्चुअली. आई सेड, यू नो, अगर मैं होती उस केस में, मैंने क्या डिफरेंट करना था. यू नो, सो आई वुड हैव डेफिनेटली नॉट कॉल्ड हिम सो मेनी टाइम्स. Every time he had to go. You know, and why did he have to go every time? And why is the court delaying it so much? Forget delaying it. Why did he have to go that many times? You know, and all the other multiple cases, क्यों नहीं उन्होंने सब क्लब कर दिए केसेस और एक कोर्ट के सामने रखे कि देखिए कि कैसे टॉर्चर कर रहे हैं. Thirdly, पुलिस को किसने क्यों नहीं क्वेश्चन किया. एक, यू नो, आपको कोर्ट का इतना खौफ नहीं होता जितना आपको पुलिस का खौफ हो जाता है. आप लॉयर का आपको खौफ नहीं होता, जज का खौफ नहीं होता, पुलिस का काफी खौफ होता है. How did they lodge that complaint? Was it true? Did they investigate enough? You know, and एक पुलिस का सेट प्रोसीजर होता है. जब नोटिस इशू करते हैं, फ्राइडे को नोटिस इशू करते हैं, सैटरडे संडे को शायद आपको बेल ना मिले. ये सब क्यों है प्रोसीजर्स. सो मोर देन द लॉ, एक पुलिस प्रोसीजर्स में काफी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत मैंने सुना है, जो भी आउट इन द पब्लिक है, मैंने एक चीज समझी, जो उसने 90 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पेज लिखे का वो लिखा. If I just go to this, if I have to such as I don't want to, but अगर मैं वो minimize करके अगर बोलूँ ना, I think अगर कोर्ट equally खड़े रहते कि ये केस है, let's settle this, let's sort this, because
जब आप डिवोर्स पे जा रहे हो तो you're not going to expect the other person also to behave very nicely with you. Correct. You're heading for divorce is only because it's gruesome. Correct. बट जो मैंने जैसे एक जज हंसी किसी बात पे ये कुछ तो अगर जस्टिस हो जाता कि ठीक है नहीं आप जो डिमांड कर रहे हो वो ज्यादा कर रहे हो वो उसकी हैसियत नहीं है या वो उतना नहीं है, लेट्स बी प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें हैं, खत्म करो। 80,000 rupees a month. और 2 लाख मांग रही थी 2 लाख So, I'm saying- 2.5 लाख and 4-5 करोड़ आप मांग रहे हो in settlement. You know, how can you even do that? That's what I'm saying. So I'm saying But अगर you know, all कोर्ट the उनके साथ खड़ा रहता methods in court. You know, मैं एक जगह बात करी थी, they said कि नहीं आप लोग सिर्फ lawyers की तरह आप बोल रहे हो केसेस पे केसेस डालो। मैंने कहा मैं ये नहीं बोल रही, कोई और लॉयर बोल रहा था, ऐसे मैं ये नहीं बोल रही। आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ अदर मेथड्स। यू कैन लुक एट एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आप एक आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, दैट्स फॉर फ्री इन कोर्ट। आप एक मीडिएशन के लिए जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो समवॉट फ्री और ऑल्सो मिनिमल कॉस्ट। और आपको अगर अपने लॉयर पे विश्वास नहीं हो रहा, आप एक फ्री लीगल एड हर कोर्ट प्रोवाइड करता है। आप भले यू डोंट टेक फ्री लीगल एड, बट यू कैन गो देयर एंड एटलीस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कि शायद इसमें कुछ गलत हो रहा है। मे बी आई नीड टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। यू नो, लाइक हाउ आई रेड दैट पेटिशन एंड आई सेड कि ये मेरे इसमें मिसिंग है। यू नो, सो मे बी आप भी शायद वो कर सकते हो। You know, there are other methods available. And I just feel that, you know, explore those options also. And यहाँ पे, again, I'll come on the relatives. वो relatives के बीच में बात ही ना करवाइए। Because इतना ज़्यादा मैटर बुरा हो गया है कि आपने 9 केसेस डाल दिए। She filed 9 cases against him. पर आपको नहीं लगता कि जो जेन्युइन केसेस इस वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं? बिल्कुल। क्योंकि जो एक्चुअली जो आप जैसे आप बोल रहे थे कि 1000 और ये एक केस आता है, बट इस एक की वजह से वो 999 लगता है कि यार ये भी झूठी बोल रहे हैं। So actually you are doing a great disservice by taking up a case like this. Like, you know, a lot of people say नहीं मैम आप तो आपका इतना हाई प्रोफाइल है आप जरूर करते हैं। मैंने कहा मैं कभी भी झूठा केस नहीं डालती और मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई डोंट थिंक मैंने एक भी 498A में एक केस डाला है। ओके, आई जस्ट डोंट डू दैट। एक आपका भी एक मॉरल कंपास होता है लाइफ। एब्सोल्युटली। यू नो, तो मर तो घुटने पे आ जाएगा। 498 जस्ट बोलने से ही वो घुटनों पे आ जाता है। बिल्कुल। यू नो, सो आई हैव नॉट डन दैट, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड डिस्पाइट दैट I've risen so high, so there must be some greater justice Absolute. working for that. Absolute. You know, and I also feel कि nowadays आपको there should be a basic knowledge of law. नहीं है तो पढ़ लो। एक आता है बेयर एक्ट। Okay, you can buy a copy of the Bear Act. It costs anywhere between 40 to 150 200 rupees. पतला सा होता है। You can read it in one sitting. 15-20 पेज जनरल आइडिया आ जाए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ गूगल पे जाए, बिकॉज गूगल में यू आल्सो हैव दीस डेंजरस थिंग्स व्हिच कम, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड। नो, रीड द बेयर एक्ट। एंड इफ यू फील देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर मैरिज, कंसल्ट अ गुड डिवोर्स लॉयर, बिकॉज आई फील समटाइम्स even coming to a divorce lawyer, it opens your mind that no, I don't think my marriage is that bad. Yeah. And a lot of times, you know, the guys think that, okay, I'll just walk in, I'll get a divorce, I'm out. Nothing, I don't have to give anything. It'll open your eyes also. Even for the women, it'll open their eyes. You just can't walk in and say, I'll take a big fat alimony. 3 महीने में 4 महीने में matter khatam, I'm a free bird. So sometimes getting that advice may actually end up saving your marriage. Got it. You know, like a couple of cases that came to me. You know, and they said that the wife actually wanted out, you know, and she said, no, I know that he's got this money, I got this thing, I don't want to put up with this, so ma'am, I'll get out. Wife का नाम choose करो कोई अच्छा। Svetlana. Yeah. Nice. Svetlana. Yeah. She's played one of my ma'ams in one of my shows. Didn't they name? Handies. Okay, Svetlana. And she said, you know, after that, the world is my playground. And I'll move to America. Both my children are studying there. I should get at least 300 to 400 crores over here. I said, sure, you could. Because his net worth was close to 5,000 crores. Okay, you could. But it will take time. How much time?
I said, if it's a contested divorce, which it looks like it's going to be, it could be anywhere between 1 year to 10 years. So suddenly Svetlana said, okay, ma'am, let me think about it. She came to me about 2 to 3 years ago. She's not yet come back. And I know that she's not filed. So, you know, sometimes you may have that. Reality check. जो लगता है वो होता नहीं है, एक बार जाके आप बस कंसल्ट कर लो. Yeah, like even a guy, you know, who was living in with his girlfriend. नाम चूज करो. दीपिका नहीं. अच्छा, दीपिका तो गर्लफ्रेंड का नाम. गाय का नाम दिलजीत. हाँ, ठीक है, दीपिका. Okay. Deepika Diljit. Okay. So Diljit is married to क्या करे? Simran. I like that name, Simran. Okay. Now Diljit thought that, you know, he can play the field with both of them. Came to me and he said, you know, I put some money on Deepika's name. Simran to है ही. You know. So उसको भी थोड़े से पैसे दे दूंगा. तो फटाफट मेरा डिवोर्स हो जाएगा. You know, I'll move in with Deepika full time. And this marriage is over. I said, what about the children? He said, वो तो सिमरन संभाल लेगी. So ठीक है. I said, and क्या planning क्या है दीपिका के साथ? So he said, नहीं मैम, बस 6-8 महीने में फटाफट शादी. And then we'll start our own family. I said, so what about Simran? उसको कैसे सेटल करोगे? मान जाएगी डिवोर्स की? क्या है? खत्म कर देता हूँ ना मैटर. I said, ऐसे नहीं होता. ऐसे मानेगी वो कि नहीं? He said, नहीं मानेगी तो नहीं, जबरदस्ती एक्स पार्टी करवा लूंगा मैम. He said, ऐसे कोई एक्स पार्टी डिवोर्स नहीं होता. It is a very long procedure. Again, reality check. You know, it's, I mean, an ex party divorce happens, but it's a long procedure. Correct. I had somebody, she's come to me, she's 52 years old. And she said, ma'am, बस अब मैं थक गई हूँ divorces. Divorces ही चाहिए मुझे. I said, divorces ही मतलब? She said, I mean, एक divorce चाहिए. I said, okay, you know, and she said divorces. So she says, and then I understood why, because her husband had been having one affair after the other, after the third. She said, ma'am, I got married at 21. Now my children are big. You know, everybody says big, they don't say they've grown up. You know, and they says, ये तो मैं divorces बोल के थक गई हूँ, but अब मुझे चाहिए ही चाहिए. She says, I cannot put up with it anymore. So you see this, it's okay for men to cheat. I'll be a Casanova. I'll be respected because of that. It's okay, she has to put up with it. No, dude, times have changed. So abusive marriage, cheating. Third thing. Okay, cheating is infidelity. Infidelity, okay. Yeah. That is for both. I'm giving the guy's example because more cases come to me. Fair enough. What I'm asking you is generic, which goes for either or. It's not compromisable whether you're a man. Cheating. Financial cheating. What is exactly that? Financial cheating is like this. Okay, I had 2-3 cases जो मेरे सामने आए हैं. Okay, क्या नाम देंगे? Financial cheating में एक का नाम रखते हैं Dolly. Because it sounds like a currency. And एक का नाम रखते हैं Raj. Raj. So in Dolly and Raj's case, I got a case, okay, where the wife was getting all the properties dhire put on her name. Okay. And Raj didn't know about it. Okay. I'll tell you how he didn't know about it. Okay. Every time something came up, she would just say, you know, just sign these papers. ठीक है ना, I'm looking at the office. ये जरा sign कर दो. And you know, after 10-15 years of marriage, you don't think that much. कोई मांगा sign कर दिया. Okay. And he kept on signing off all the properties, not realizing Dolly is also quite educated. Okay. I won't say what was her profession. Okay. And by the end of it, Dolly is controlling all the finances. And they're still married because now Raj is saying, where is he going to get the money from? Including the house that they are staying in, everything now belongs to Dolly. That is financial cheating. That is financial cheating. And it's not like men are not doing it. I'm sure. You know, men do 2 types of financial cheating. Firstly, the poor wives. Okay, let's call the wife Sunanda. Okay. Sunanda didn't know that her husband, the daughter of Sunanda, when she turned 21 and she joined the father's family business, she said, Mama, Papa is worth 300 crores.
he was giving Sunanda about 50,000 a month and saying, Papre, your expenses are not ending only. Expenses are not ending only. Sunanda never knew. And Sunanda's giving tuitions. He just never ever let it up. The daughter came and said, and you know how the daughter also found out? Because the father said, join the family business, so on and so forth. Okay, and then the daughter is checking all the bookings. She was in charge of accounts. She said, yeah, all these romantic places my father is going to, what's going on? And she found out Lake Como, 6 lakhs a night. This, 2 lakhs a night. She said, where is all this money coming from? And then she started doing a back check and she said, oh my God, father's company is worth 300 crores. None of us ever knew. And my mother is trying to save every penny. We never got any money. That is one type of financial cheating. The other type of financial cheating that I encountered was where the husband, a lot of times the husband's net worth, let's call him Parik. Parik. Okay. Parik sound on Nirich. Parik sound. Parik sound, Gujarati, like, paise becha raha hu, stock market mein paise banaya. So, and maybe my name is in that, remember that list which was there? So many lists came out. Okay. And Parik is worth 5,000 crores. Okay. And his wife, Sunita. Okay. So Sunita didn't know what's going on. Okay. And Parik has been doing all these investments in Sunita's name forever and ever and ever. Sunita is also the trustee of a 500 crore fund which he doesn't know about. Sunita just gets an American Express card. Okay. Parik pays off that money. He gives her a kharchi of 50,000 a month. And rest everything is paid for. So Sunita is clueless after 15 years of marriage. Till Parik finds out something and he wants a divorce. And then Sunita realizes, oh my God, all this money was going through me. So actually in income tax returns, I'm very, very rich. And Parik never told me. And then when he found out about this and he wanted to file for divorce, very happily he's getting the signatures done from Sunita to transfer the power of attorney back to him. So he took over for a lot of things, including joint properties. Sunita is signing because she's always signed the papers. Wow. So that is financial cheating. लोग कैसे इतना चालाक कैसे हो सकते हैं? मेरा दिमाग उतना चले ही ना. And then they're unhappy. I just feel कि आपको वो 5,000 crores देख के, if Parik was a happy man, I would have said it's worth it. But then they're not even happy. So maybe that kind of cheating doesn't work. I'm just thinking कि लोग इतना दिमाग कैसे चल सकता है? पैसे कैसे इतना दिमाग बिगाड़ सकता है एक इंसान का कि हर तरीका सोच लेता है इंसान के कैसे वो मैं अपने पास रखूं. क्या करोगे यार? Your relation with money is only till your last breath. Absolutely. तो But people don't understand that. So it's this thing, this sort of a thing. So, these 3 reasons. Other things which, ये अगर हो रहा है तो boss, walk out. And that acknowledgement. Acknowledgement, of course. If there is a complete breakdown of communication, you have nothing to say. And you can't acknowledge each other. And if you're so harsh in your language to each other, it's not okay. People say, it's okay, it's okay. I've stayed with this person for 30 years. Well, I don't think it's okay. Actually, it isn't. It isn't. And you're just avoiding your house. You just want to get out. I don't think you should be in that marriage. जब मेरी शादी हो रही थी, तो love marriage, dated each other for good 6-7 years, and then we got married, and now, like I said, कल anniversary और आज आपके साथ बैठ के डिवोर्स लॉयर के साथ में बैठा और मेरी बीवी पूछ रही है यही दिन मिला. मेरी तो एनिवर्सरी गिफ्ट हो गई. तो शादी से पहले मेरी बीवी ने मुझसे 2-3 चीजें कही थी. सो बोला, कभी मेरे ऊपर हाथ मत उठाना. नाइस. कभी मुझे गाली मत देना. वेरी नाइस. और कभी मुझे छोटा मत फील कराना. वाह. आई सेड ये तो हमारी अपब्रिंगिंग में हम करते ही नहीं है. मतलब ये फैमिली में मैंने कभी देखा ही नहीं है और ये हो गया नहीं. तो और वो एक चीज है जो मैंने उसको बोला कि ये तो गिवन है, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं. एक बार शादी से पहले बोलना था. वाह. गिवन है वाला नहीं. हाँ, गिवन है. आई नो यू, आई नो हाउ यू आर, आई नो हाउ योर फैमिली इज. करेक्ट. पर मैं वर्बली बस बोल रही हूँ.
Wow. I said, wow. Hats off to her also. I said, ये दोनों तरफ से होगा. Uh, ये नहीं कि तुम मुझे मार रही हो, तुम मुझे गालियां दे रही हो, ये नहीं चलेगा. तो she's like, हाँ, ये नहीं करेंगे. प्रॉब्लम है, बात करेंगे. and नहीं समझ में आ रहा है, फिर देखेंगे पेरेंट्स के पास जाने क्या करना है, कैसे करना है. see, that's where the marriages come to the sixth But 6th year. Touch wood, yaar. छोटा. Touch wood, you know. Yeah. And see, these are the conversations which we were saying, na. Have these before the marriage to make marriages work. You know, and then you wouldn't sort of just get shocked. You know, a little bit of kindness goes a very long Very way. long way. I mean, I remember our parents used to be very kind with each other. My dad was an Air Force pilot. I speak about him everywhere. I've dedicated my book to him also. You know, he fought 3 wars for this country. And he gave me so much of self-esteem. And I used to see him also talking to mom. And, you know, he used to always call her darling. You know what I'm saying? He was a nice, romantic man. Wow. Who never ever spoke rudely to his wife. And even if, you know, sometimes people used to say anything about mom, he used to just cover it up or change the topic. But he never blamed her for anything. Wow. And I grew up seeing that. World need more men like him. Absolutely. I mean, he insisted that I should be able to earn my living, which I think proved to be very, very fruitful. You know, when I was going through a rough patch in my life. I mean, he used to make me read the newspaper and say like 5 words every day, you have to do this thing. So I read a lot. You know, he said, you must do what you want to do, but you must be financially independent. This I'm talking about like someone I was born really late, you know, and he was born in 1931. Wow. And, you know, someone like that to have these views. And he always spoke about equality. So I grew up thinking I can do anything in this world. You know, and I never ever believed that men and women are not equal. Maybe that's where my thoughts come from. Ji. You know, I don't look at we're talking about justice. So I don't say that I'm pro men or I'm pro women. I just say I'm pro justice, pro doing the right thing. You know, and I actually credit my dad for that. I always say like he was the first feminist in my life. Wow. He shaped a lot of way, the things that I do. You know, I'm very, very proud of every little work that I do. You know, I started working when a lot of women would say, but why are you working? Don't you have money? I said, no, I'm working for my own self-esteem. You know, and education. And also, you know, this feeling, like I said, of equality. Like in my childhood, I write about it in my book. You know, we used to come because my father's getting posted everywhere. We used to come to Bombay and used to get Alfonso mangoes. And my cousin, you know, used to stay in my aunt's house. And they used to, you know, my cousin, he's a guy. तो उसको ज़्यादा मिलता था milkshake. And I said, यार ये क्या है? हम भी हैं, you know. So he said, नहीं, लड़कियों को कम मिलता है. किसने बोला यार? मैंने कभी ये सुना ही नहीं था लाइफ में. You know, so he said, नहीं, लड़कियों को कम मिलता है. I said, चलो पूछते हैं. So he actually asked his grandmom, जिसे हाँ, लड़कियों को, you know, इतना नहीं मिलता है ना. I wrote to my dad. I said, you know, this is what he's saying. In the meantime, वो तो लड़ाई तो हुई. And I तो beat him. मैं तो बहुत clear हूँ, you know. Love it. So I wrote to my dad and, you know, this is what he's saying and, you know, how is this possible? And you never told me this and all of that. And I beat him and, you know, is that so? My dad wrote back. I still know what he wrote. I was barely 6 years old. And he said that, you know, no, even mazak mein nahi unhone bola men and women are not equal. So you know what he said? He said, it is his house. You're a guest there. So when you come back to your home, you can have as much milkshake as you want. Mazak mein bhi nahi ye bola. Ki, you know, you're not equal. He said, so you must be gracious as a guest and let him have additional milkshake. And he said, you are absolutely not to beat up anyone. You know, so that also he wrote. Yeah. You know, so वो अब मैंने थोड़ा कम कर दिया. अच्छा, अब कम कर दिया, बंद नहीं किया, कम किया. मैम लास्ट 2-3 सवाल है. Sure. ये बहुत क्विक सवाल है. प्रीनप्स इंडिया में कॉन्सेप्ट है, इलीगल है. Illegal. They're against the law. They're against the law because बहुत लोग not valid. क्योंकि आज जो मैं सुन रहा हूँ ना कि हाँ प्रीनप करा लेंगे. These are young kids getting married. तो वो वैलिड नहीं है. Prenups are not valid. Prenups are not valid. In India. In India. Okay. Second of all, जब समझो एक पॉइंट आ गया,
जहाँ पे बोला है कि नहीं डिवोर्स होना ही है, हम्म। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवोर्स है कि ठीक है ये है वो है, Acrimonious versus acrimonious versus mutual consent. हाँ, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट में कैसा होता है, समझो दोनों ने डिसाइड किया, रोमा एंड विक्की, रोमा एंड विक्की ने डिसाइड ठीक किया है। कि नहीं चल रहा है, रोमा एंड विक्की सेट की बस हो गया अभी। रोमा एंड विक्की के 2 बच्चे हैं, बच्चों का क्या नाम है, श्रद्धा एंड नहीं समीर तो हो गया, श्रद्धा एंड सनित, सनित एंड श्रद्धा, ठीक है। आई एम वेरी बैड एट नेम्स, See my name. वाओ अमेजिंग, Thank you. So, आई लव इट, I like giving them names, so then you can like identify. Yeah. हाँ, ये लोग हैं। या या So, Shraddha and Sanit. Okay, so they've decided कि नहीं, Roma says कि I don't want to be in this marriage, and husband also feels that way. Vicky also is saying कि नहीं, अब मेरे को नहीं रहना इस मैरिज में, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों अडल्ट्स नहीं है, 11 और 13 की एज है, तो आगे कैसे करेंगे। समझो दोनों वर्किंग पीपल है, ओके, एंड दे डिसाइड कि चलो वील पूल इन आवर इनकम, दोनों मिलके महीने के समझो 5 लाख कमाते हैं, ओके, एंड दे आर स्टेइंग इन बॉम्बे इन वन लोकेलिटी, घर अपना है। तो क्या कर सकते हैं कि ना, टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में बात करके थोड़ा सा ले डाउन कर सकते हैं, एंड से कि हम लोग को ऐसे ऐसे करना है आगे जाके। समझिए रोमा इज ऑल्सो सेइंग कि चलो ठीक है, मेरी भी सैलरी ऑलमोस्ट इक्वल है, बट चलो बच्चों का खर्चा है, हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। तो कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं डिवोर्स में, फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, बच्चों के एक्सेस की कंडीशन होती है, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो फाइनेंशियल में ही आ गई, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। बाय एंड लार्ज यही इश्यूज होते हैं डिवोर्स में कि जिनको आगे जाके बंटवारा होना होता है। Okay, so you can look at it like that, and you can say, okay, we'll go for a divorce by mutual consent. Then you can get a lawyer to draft your terms. Why I'm saying lawyer to draft your terms? So that legally you are in the clear. Correct. Okay, you can do it yourself also. In India, you can appear as your own litigant. Correct. Okay, so you can, but it is a little better with a lawyer. Okay, so this divorce, usually by and large, you get it in 6 months. आजकल मैं बाय एंड लार्ज की बात करें, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है ना कि आप काउंसलर दो, 6 महीना कूल ऑफ पीरियड लो। बिल्कुल बिल्कुल। सो आजकल वो जो वेव ऑफ कर सकते हैं आप कूलिंग ऑफ पीरियड, तो मैं उसकी एक्सेप्शंस की नहीं बात कर रही। ओके ओके, मैं जनरल जो कोर्स जनरल की बात करी। ओके, एक्सेप्शंस तो बहुत होते हैं लॉ में, यू नो, सो मैं जनरल की बात करी। अब दूसरा आ गया एक्रिमोनियस डिवोर्स। ओके, एक हो गया नाम, समझिए क्या नाम रखेंगे, इंग्लिश नाम रखें, हाँ कुछ ब्रिटिश नाम रखता है, स्टीफन, स्टेफान। ओके, स्टेफान इज मैरिड टू मोनिका, ठीक है, स्टेफान एंड मोनिका। Okay, Stefan wants out of the marriage. Stefan has fallen in love with whom? With Rosa. चलो डन, इंग्लिश नाम मेरे को अच्छे से आ जाता है। ठीक है, ओके। Rosa is Italian. Stefan wants out of this marriage, and he plans to move to Italy and be with Rosa for the rest of his life in Venice. Okay. Now, this one doesn't know his wife. Monica doesn't know. No. Monica is saying, suddenly one fun day, Monica catches Stefan and Rosa together. Okay. Now, if they've both been caught together, obviously, she has spotted them checking into a hotel. Okay, so she's quite shocked. And she sits there and waits in the lobby. Okay, sits the whole night. Okay, the next morning, Stefan is coming down, holding hands with Rosa. So it's obvious that they have not been reading the holy scriptures together. Okay, कुछ तो कर ही रहे हैं. So पूजा नहीं कर रहे थे, ना पाठ ना पूजा, Correct. you know. So अलग तरीके की पूजा. Okay, so she confronts him. Okay, and he says, I want a divorce. Okay, she says, okay, if you want a divorce, अभी तो नहीं मैं देने वाली. Do what you want to do. Okay, and they've got 2 children together. Both children are studying in a boarding in Switzerland. Okay, so he says, you know, we'll see. Okay, I'll see you in court. Okay, fine. Stefan goes and files in court, and Monica is not agreeable, and she can actually not grant the divorce for a very long time.
काफी साल चल सकता है वो डिवोर्स, जिसे कहते हैं एक्रिमोनियस डिवोर्स ओके और अ कंटेस्टेड डिवोर्स। तो उसमें भी मुद्दे तो सेम होते हैं, चिल्ड्रन, फाइनेंसेस, एलिमनी, access, houses, movable, immovable. But it can take a very long time. अभी इसी पे बात करते हैं, स्टेफान एंड मोनिका की डिवोर्स पे कुछ ऐसे पूछ लेता हूँ आपसे मैं। स्टेफान को चाहिए डिवोर्स। Why you are saying Stefan and Monica? Because ये नाम आपने रखे हैं। नहीं, आप दूसरे नाम 2 नाम ले सकते हैं, आपके नाम लेते 2, आप बताइए। ठीक है, Stefan and Monica। ठीक है, बिकॉज ऐसे ही स्टोरी चल रही तो इसमें से ही पता चल जाएगा। अब स्टेफान को चाहिए डिवोर्स, ठीक है। अब स्टेफान बोलता है कि मेरे को डिवोर्स चाहिए और पैसे मेरे पास है, तू हाउसवाइफ रही है, तेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं जो बोलूंगा जैसे बोलूंगा, मेरे पास एक हाई हैंडेडनेस है क्योंकि तेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो लॉयर क्या करेगी 25 1 लाख 2 लाख 5 लाख होंगे, वो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे उड़ जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे जब एक पार्टी को लगता है, स्टेफान को लगता है कि मैं तो दबा के डिवोर्स ले सकता हूँ, नहीं कर सकता, नहीं। वो और बोलेगा कि ठीक है एलिमनी के लिए तू लड़ रही है, मैं वन साइडेड डिवोर्स वो ले ही नहीं सकता। नहीं, वन साइडेड डिवोर्स एक चीज होगी, दूसरी बात दबा के भी, मतलब मैं वन साइडेड उस तरीके से नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ एकदम ही वो दबा के वन साइडेड हो जाता है, वो ले नहीं सकता वो डिवोर्स, बिकॉज मोनिका कैन कंटिन्यू फाइटिंग हिम। करेक्ट, बट मोनिका के पैसे नहीं है, फैमिली कोर्ट में लड़ेगी, ओके, कुछ तो लॉयर रखेगी, कुछ तो अरेंजमेंट कर लेगी लॉयर के साथ कि चलो मैम मैं बाद में पेमेंट कर सकती हूँ। ऐसा हो सकता है मोनिका की फ्रेंड वंदना होगी, फिर पॉसिबल उसकी फ्रेंड एडवोकेट वंदना शाह हुई, वो तो स्टेफान तो आएगा ही नहीं डिवोर्स के लिए, वो आएगा वंदना शाह के पास, सो सब कुछ तो वो करेगी नहीं, बिकॉज उसके राइट्स बरकरार हैं। ओके, इट डज नॉट मैटर whether you have the money or you don't have the money, justice is for all। नहीं, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत चालाक लोग होते हैं, बोलते हैं कि यार तू देख मैं कैसे इसको, तो मैं ये सब इसी एग्जाम्पल के थ्रू कि बॉस जो आप चालाकी समझ रहे हो शायद वो हो नहीं पाएगी, कोर्ट में नहीं चलेगी, ठीक है। तो अभी स्टेफान ने बोला ठीक है चल, वो नहीं दे रही है, एलिमनी इतना मांग रही है, मुझे नहीं देना है इतना, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, एलिमनी नहीं दूं। करेक्ट, वो बोलती है नहीं मुझे एलिमनी इतनी मेरी जो बनती है, मुझे भी अपना घर चलाना है, बच्चे देखने हैं, ये है वो है। वो बोलता है नहीं, वो बोलते है कि मेरे पास इतने पैसे, इतना पावर है कि मैं केस को बहुत लंबे समय तक चलाऊंगा, जब तक कि जजमेंट आएगा, तेरे पास पैसे आएंगे, तब तक तू पहले ही विड्रॉ कर लेगी, क्योंकि तेरे पास तो 5-10 लाख रुपए पड़े हुए, 50,000 रुपए पड़े हुए, तो मैं उल्टा केस को चलाते जाऊंगा, मैं तो जी रहा हूँ, मुझे उस बीच में मुझे कुछ देना नहीं है तुम्हें। नहीं, पर ऐसा नहीं होता। हाँ, ये इंटरिम मेंटेनेंस भी तो होती है, और इंटरिम मेंटेनेंस का परसेंटेज, इंटरिम परसेंटेज तो फिक्स नहीं है, लॉ फिक्स नहीं है, वो हर केस लॉ में डिफर करता है। इसलिए मैं कहती हूँ गो टू गुड डिवोर्स लॉयर जो आर्ग्यू कर सके मैटर। ओके, समझिए स्टेफान की नेटवर्थ हो गई 10,000 करोड़, ठीक है। स्टेफान ने, मैं एक केस पे भी आऊंगी, 10,000 करोड़ की उसकी नेटवर्थ हो गई। ओके, इसके पास, मोनिका के पास कुछ इतने खास पैसे नहीं है, चलो फ्रेंड्स फैमिली भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, सब हेल्प करते हैं, मैंने देखा है। ओके, सो व्हाट हैपेंस, हमने उसने डिवोर्स फाइल किया, हमने यहाँ से डिवोर्स का रिटन स्टेटमेंट दे दिया, रिप्लाई, और उसमें हमने आगे जाके एक और एप्लीकेशन डाल दी इंटरिम मेंटेनेंस की, ठीक है। इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली, उसमें इंटरिम मेंटेनेंस में हमने इसके सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखा दिए। ओके, समझिए एसेट्स उसके 20,000 करोड़ है, लायबिलिटीज 10,000 करोड़, जस्ट फॉर कैलकुलेशन। हाँ 10,000 करोड़ उसकी नेटवर्थ है। ओके, यहाँ पे हमने मोनिका का दिखा दिया, उसके ना कोई एसेट्स है ना कोई लायबिलिटीज है। ओके, आई चेंज दैट, एसेट्स है, लायबिलिटीज, एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज बहुत है। ओके, सो हमने दिखा दिया कि उसकी नीड इज अबाउट 1 crore a month फॉर एग्जाम्पल, एंड सेकेंडली उसका लाइफस्टाइल एक ऐसा था, जब वो स्टेफान के साथ जा रही थी, प्राइवेट जेट में घूम रही थी, जब वो स्टेफान के साथ जा रही थी 5 स्टार होटल में रह रही थी, जब वो स्टेफान के साथ जा रही थी दे वर गोइंग फॉर स्कीइंग इन स्विट्जरलैंड, जब वो स्टेफान के साथ जा रही थी शी वाज गोइंग टू टॉप नॉच रिजॉर्ट इन इंडिया। सो लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे भी डिपेंड करता है। एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत बेहतरीन जजमेंट है, रजनीश वर्सेस नेहा, उसमें ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
कि you have to look at the lifestyle, you have to look at the assets, liabilities, needs, desires, so on and so forth. Needs, desires तो मैं बोल रही हूँ, but everything comes in that. So interim maintenance is not कि जब तक केस चलता रहे. Interim maintenance as per law within 6 महीने या 8 महीने या 1 साल में ग्रांट हो जानी चाहिए. अगर नहीं हुई, चलिए इंटरिम मेंटेनेंस हम लोग केस जीत गए, इंटरिम मेंटेनेंस उसको हमने 1 करोड़ पर महीना उसको मिल गई. फॉर एग्जाम्पल स्टीफान कहता है मैं चैलेंज करूंगा, चलो हाई कोर्ट में जाएगा. ओके, आजकल कोर्ट्स आर क्वाइट कंसिडरेट इन अ डिफरेंट वे. उनको भी पता है ये तो सिर्फ मैटर दबाने की कोशिश करे. दे ट्राई एंड सेंड यू, ट्राई एंड सेटल इट, डू अ मीडिएशन, डू एन आर्बिट्रेशन. तो समवेयर इवन मोनिका विल क्लाइम डाउन एंड से कि यार Stefan has now found a new love. I may hate the fact. पर मुझे मूव ऑन करना होगा. तो एक कोर्ट्स एक ऐसी भी थोड़ी सी बुद्धि दे देते हैं. लॉयर्स भी बात करते हैं. You know that now the marriage is over. अब तो the nuts and bolts are left of the marriage. You know, so वो interim maintenance उसको शायद हाई कोर्ट भी बोले कि नहीं आप इतना मेंटेनेंस भर के आइए फिर आप ये मैटर चैलेंज करिए. काफी दफा हाई कोर्ट ऐसे बोलता है Okay. कि आपके अरियर्स इतने, पे 50%, देन वी कैन लुक एट द आर्ग्यूमेंट. लाइकवाइज यू मे वांट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू कैन डू दैट, बट समवॉट कहीं ना कहीं से आपको ये जस्टिस मिल जाएगा. Got it. यू नो, एंड यू मस्ट स्टडी द लॉ. Bare Act. हाँ, बेयर एक्ट पढ़ लो. यू नो, एंड जैसे यहाँ पे आजकल केसेस चल रहे हैं, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट के भी केसेस चल रहे हैं. यू नो, जहाँ पे द वाइफ्स डोंट हैव दैट मच मनी, आपके उस पे पॉइंट पे आ रही. तो यहाँ पे द वाइफ हैज शेयर्स ऑन अ पब्लिकली ट्रेडेड लिमिटेड कंपनी. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया. तो नाउ इवन द इन्वेस्टर्स आर सेइंग टू द हस्बैंड, ऑल्दो इन्वेस्टर्स का कुछ काम नहीं है, बट इन द एंड इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी and the husband and wife are fighting and the wife has certain shares or a certain percentage of the shares, it may impact the running of the company. Correct. और वो कंपनी के शेयर्स भी डाउन हो गए थे बीच में. So you see, ये सब चीजें भी होती हैं. We have to look at divorce as a microcosm existing in a macrocosm. Divorce में ये isolation ऐसी नहीं है, क्योंकि बाकी भी फैक्टर्स होते हैं. देखिए, और इंडिया में तो आई से डिवोर्स इज सोशियो लीगल. सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं. थोड़ा वाइज को क्या भी सपोर्ट होता है, वो भी बोलते हैं चलो बेटा सेटल कर लो मैटर. वेरी ट्रू. कुछ तो करिए, बच्चे भी प्रिवेल कर जाते हैं. यू नो, अभी आई हैव जस्ट डन अ सेटलमेंट इन क्वाइट अ फ्यू क्रोर्स, 60+ क्रोर्स की सेटलमेंट किए. तो बच्चे भी बोल रहे थे फादर को आप सेटल कर लीजिए. 150 करोड़ की भी सेटलमेंट की है, वो हमने मिनी लिटिगेशन करके किया. बट यू हैव टू टेक एवरीथिंग into consideration, and let's not forget, even fathers love the children. You know, you can be, even the mothers of course love the children. You can stop being husband and wife, but you'll never stop being parents. Correct. You know, so you'll never ever face that situation कि मैं मदर को कुछ देने ही नहीं वाला, या वाइफ बोले कि मैं बच्चों को मिलने ही नहीं दूंगी. I have seen children say I want to meet the father. So you see, उसके आगे आपके भी हाथ बन जाते हैं. So we have to look at it in totality. So I think, you know, that kind of answers a lot of questions. Absolutely. And also the judicial system is maybe taking long, but हम लोग भी तो 1.3 billion people. But it is not कि कोई justice नहीं है. And मैं देखती हूँ काफी cases में थोड़ा सा time extra लगता है. But that's the way it is. You know, there is still yet you can still request for early hearings. You know, you can also speak. One thing I want to put out, that as a litigant, you may have a lawyer, but you can seek permission from your lawyer and from the judge sometimes to address the court on your own. शायद आपकी फरियाद सुन के कोर्ट में may grant you a different sort of hearing in terms of, okay, ठीक है, चलिए, I'll listen to you. Let's see if we can settle the matter. Like I had a husband and wife who actually didn't have that much of a problem. केस चलता रहा कोर्ट में 6 साल तक, and suddenly the judge said, you know, कि आप कुछ करके आप रहना चाहेंगे एक दूसरे के साथ. So the wife said, I don't mind.
You know, Hmm. I'm getting goosebumps. This is very new. Husband also said कि हाँ ठीक है चलेगा. ये थोड़े adjustments, arrangements करके रह लेंगे. So the judge said ठीक है फिर 6 महीने का ट्रायल ऐसे कर लेते हैं. हाँ. I like that. So you know maybe आप ये भी कुछ थोड़ा सा खुद भी बोल सकते हैं. बिल्कुल. So कोर्ट पे काफी एवेन्यूज हैं. You know and आपकी काफी you know आपकी सुनवाई होती है. You know, so I just feel look at all these alternative Very true. also which are available for you and you know approach court in that fashion. And of course कहीं फंस जाएं तो एडवोकेट वंदना शाह है. Absolutely. You know. Thank you so much, ma'am. And एक चीज जो मैं अपने पर्सनल, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि डिवोर्सेस रोज हो रहे हैं. अराउंड 20 केसेस अ डे का एक कुछ एवरेज है. आई थिंक 20 या 28 केसेस पर काफी डे. है. मेरा एक थंब रूल है जिसमें मैं देखती हूँ कि 10-15 साल पहले देवर ओनली अबाउट 15 to 17 matters, sometimes maybe 20 matters listed on. हाँ. आज मतलब कि 7 फ्लोर्स हैं तो समझिए 140 या 90 और 140 के बीच में होते थे. आज एक फ्लोर में 80 से 90 मैटर्स कभी कभी लिस्ट होते हैं. वाओ. तो यू कैन इमेजिन कि क्या ग्रोथ रेट है. बहुत है. बहुत है. I would want you to address the audience के जो लोग just because वो public eye में हैं, I want to come to that also. don't demean their journey and life at that moment, because वो बहुत ही tough phase है उनकी जिंदगी. क्योंकि अगर डिवोर्स से जा रहे हो, आपके लिए कितना टफ है, उनके लिए 10 गुना ज्यादा शायद टफ है. शायद लाख गुना ज्यादा टफ है. I'm just being No, I also wanted to say that, you know, because कि आपका ना suppose एक नॉर्मल ने you know रिंग रीसाइजिंग के लिए भेज दी तो एक इतना बड़ा इशू नहीं है. करेक्ट. सपोज कल किसी टीवी एक्ट्रेस ने या किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपनी रिंग उतार के रीसाइजिंग के लिए भेज दी बिकॉज शी लॉस्ट वेट, तो बोलेंगे अरे क्या हो गया, डिवोर्स हो रहा है क्या, वैसे हो वैसे हो रहा है, रिंग किधर है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, यू नो. तो क्या हम लोग इसमें भूल जाते हैं कि भी पर्सनल लाइफ भी एक चीज होती है. यू नो देयर प्रोफेशनल लाइफ इज आउट देयर. They have chosen this as their profession, or the profession has chosen them, however you want to put it. But there are some parts that you would like to keep personal. And I think that boundary should be maintained because the pain is real. Absolutely. And sometimes for creative people, the pain is magnified. You know, you may not be able to withstand that much of constant pressure of being in the public eye. So I just feel, you know, कुछ भी हो, एक तो धड़कता दिल ही है. Absolutely. और डर लगता है क्योंकि जो कमेंट्स मिलते हैं, जो थ्रेट्स मिलते हैं, बहुत होते हैं. एक्चुअली एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. मैं अपनी जो अभी वाइफ है, उस टाइम पे गर्लफ्रेंड काफी सालों से डेट कर रहे थे. मैंने कभी भी पब्लिकली उसके बारे में बात नहीं की. मेरी पर्सनल लाइफ है. बिल्कुल. मैं शूट कर रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ, आप मुझे एक शो के कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, और अभी सोशल मीडिया तो आप मुझे मेरे पर्सनल नाम से भी. बिल्कुल. जब भी मैं मुझे आपके आर यू सीइंग एनीवन, आप किसी को देते, आई सेड जब अगर होगा आपको पता, मैं बता दूंगा. अगर होगा और जब होगा मैं आपको बता दूंगा. मेरे को नहीं बात करनी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में. सही बात है. अब हुआ कि शो चल रहा है, नंबर 1 शो है कंट्री का. उस टाइम पे नंबर 1 शो था, तो पॉपुलैरिटी वाज स्काई हाई टू अनदर लेवल. मतलब करेक्ट, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था. ठीक है. अब हुआ कि फैमिलीज में बात होगी. मैंने बोला पहले फैमिलीज में बात करते हैं, दोनों फैमिलीज मिलते हैं, बात करते हैं. नाउ शी एंड मी आर रेडी टू गेट मैरिड. लेट्स गेट द फैमिलीज थिंग. वंस द फैमिलीज आर ऑन बोर्ड, तब मैं ओपनली, फिर देन आई एम स्पीकिंग अबाउट इट. 2 रीजंस थे मेरे इसके लिए. एक तो पर्सनल लाइफ है. कल को किसी वजह से आप डेट कर रहे हो, नहीं चला, वो स्पेकुलेशंस मुझे नहीं चाहिए. ना ही मैं चाहता हूँ कि वो शी गोज थ्रू इट, और नहीं चाहता हूँ कि ये चीज मैं वैसे, बिकॉज आई डोंट वांट टू डील विद इट. अब जब शादी करने जा रहा, मैंने बोला, अब जब मैंने पब्लिक किया, उसको इतनी गालियां मिली, और गंदी गालियां. क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर और मेरे कैरेक्टर में जो मेरे ऑपोजिट थी, ओमकारा एंड गौरी, दिस वाज द कपल ऑन टीवी. लोग इतने इन्वेस्ट हो गए कि ओमकारा और गौरी ये नहीं समझ पाए कि ये तो कुणाल है. हाँ. और उसको इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी चीजें लिखना बहुत ही था. और एक पॉइंट पे तो आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू द कॉप्स बिकॉज शी वाज गेटिंग फॉलोड.
कि आप अपनी एंड उसको मैसेज करें आप अपने घर से निकले हैं फिर कुणाल के बिल्डिंग में जा रहे हैं क्या कर रहे हो आप शर्म नहीं आती ऐसे दैट्स स्टॉकिंग That is complete stalking, yeah. तो उस टाइम पे आई वाज गोइंग टू गो टू द कॉप्स शी स्टॉप मी एट दैट टाइम कि लेट इट पास इफ इट गेट्स मिसिंग आई सेड टुडे यू आर हियर अगर ये ऐसे आपको फॉलो कर रहा है आप कहीं मार्केट जा रहे हो आप दोस्त से मिलने जा रहे हो आप कॉफी पीने जा रहे हो आप जिम जा रहे हो Hi. कोई कुछ गलत कर दे आपके साथ तो Yeah. No, I just think that, I mean, in the end, we have to maintain the privacy. We have to give them the space, and we must respect that space and also give the heart time to heal. Because like I said, in the end, it is a beating heart. Correct. At the end of the day, you may be a superstar or you may be a normal person, not in Bollywood or whatever. In whatever. Yeah, but in the end, it's all about having a heart. Exactly. And people forget that. That was such a beautiful closing statement. Thank you. And it was about having a heart. Thank you, Vandana ji, for coming on my show. बहुत ही अलग कॉन्वर्जेशन हुई है. Thank you very much. और जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे को क्लिक बेट कॉन्वर्जेशन करना नहीं है कि इसके डिवोर्स के बारे में बताओ उसके डिवोर्स के बारे में बताओ ये करो वो नहीं किया. Thank you. क्योंकि वो सब आपको व्यूज ला सकता है बट ये नॉलेज पैदा करेगा. Thank you very much. So thank you for coming on Unlock with Kunal Jai Singh. Thank you for unlocking a very, very different conversation. Thank you, man. Thank you for having me here. And I'm wishing you a happy anniversary. Thank you. May you have many happy anniversaries together. Thank you. And I hope you have great plans for tomorrow. Yes, I do. Yeah, you too. Yes, I do. Thank you, ma'am. I hope आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा. वंदना शाह जी एक टॉप डिवोर्स लॉयर हैं और उन्होंने जितनी भी बातें की है हमेशा किसी भी अलग माध्यम से हमेशा डिवोर्स के बारे में बात की है. पर मैंने सोचा ये पॉडकास्ट थोड़ा अलग करते हैं. इतने डिवोर्स केसेस हैंडल करने के बाद आई एम श्योर उनको पता होगा कि शादियां कैसे चलती हैं. तो मैंने इस पॉडकास्ट के थ्रू ये कोशिश की उनसे ये जानने की कि उनका क्या नजरिया है शादी को लेकर. एंड लाइक शी सेड शी इज प्रो मैरिज. आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा. एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलना.